Hi everyone, this is Jamito Verma and welcome back to Boomi Techie. So in this video we will cover Boomi integration essential things. So let's get started. So here you can see I created a doc file for Boomi integration essential. So here you can see all these points. Create a folder in Boomi Enterprise platform. So we have to create a folder first इन बूमी ट्रेनिंग अकाउंट. सो हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज स्टेप. सो वी विल लर्न अबाउट द स्टेप एंड हाउ टू यूज स्टेप इन बूमी एक्टिविटी. थर्ड पॉइंट है प्रोसेस लाइब्रेरी. सो वी विल check about the process library and how to install the process from the process library. तो हम ये सब देखेंगे कि प्रोसेस कैसे सेव करेंगे, हाउ टू सेव द प्रोसेस एंड हाउ टू टेक्स्ट द प्रोसेस ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज इंस्टॉल रन टाइम. सो हियर यू कैन सी एटम. सो एटम इज अ रन टाइम इंजन you can say, and we can execute the process through runtime. ओके, सो हम देखेंगे रन टाइम इंस्टॉल कैसे करेंगे. टेस्ट द प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट एन एनवायरनमेंट. सो हाउ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट एंड हाउ टू अटैच रन टाइम इन एनवायरनमेंट. ओके, सो वी विल सी इन दिस वीडियो. नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज कंपोनेंट एक्सप्लोरर. सो कंपोनेंट एक्सप्लोरर हम देखेंगे, रिवीजन हिस्ट्री हम देखेंगे. सो कंपोनेंट एक्सप्लोरर मैं आपको बता देता हूँ पहले. तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बूमी ट्रेनिंग अकाउंट में जाओगे, सर्विसेज में जाओगे, इंटीग्रेशन सेलेक्ट करोगे, देन आपको कंपोनेंट एक्सप्लोरर दिखेगा. आप कंपोनेंट एक्सप्लोरर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा सारे कंपोनेंट, सारे प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखेगा जो आप ऑलरेडी क्रिएट किए रहोगे, या फिर कोई फोल्डर होगा, फोल्डर में आप देख सकते हो. जैसे देखो इस फोल्डर में आप देख सकते हो ये सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है. और देखो ये कंपोनेंट है. मैप हम देखेंगे आगे कंपोनेंट क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, स्टेप क्या होता है. तो ये कंपोनेंट एक्सप्लोरर है. यहाँ पे ये पॉइंट हमने कवर कर लिया. तो लेट्स सी ऑन द टॉप we need to know about these point: integration, component and its steps. This is a must know these point, like integration, what is integration, component and step. So integration देखते हैं. Integration in Boomi refers to process of connecting different application system and data source to enable seamless data flow and communication. Boomi provides a cloud-based integration platform that allow user to design, deploy and manage integration efficiently. ठीक है. सो इंटीग्रेशन हम क्या कर, इंटीग्रेशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पाइपलाइन क्रिएट करेंगे या एक प्रोसेस हम बनाएंगे जो डिफरेंट सोर्स सिस्टम से कनेक्ट होगा. सोर्स सिस्टम बोल सकते हो या डेस्टिनेशन सिस्टम बोल सकते हो, जहाँ से हम डेटा को पुल कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं. तो ये जो हम कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड बीच में हम कुछ बिजनेस लॉजिक क्रिएट करते हैं थ्रू स्टेप्स. सो ये सारे जो चेन होगा, जो एक्टिविटीज़ होगी या जो प्रोसेस होगा, ओवरऑल पॉइंट ए टू पॉइंट बी और बीच में जो भी हम बिजनेस लॉजिक यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ को, सारे स्टेप्स को कंबाइन रूप में हम एक इंटीग्रेशन बोल सकते हैं. इंटीग्रेशन कैसे बोल सकते हैं कि हम रियल टाइम पे डेटा फेच कर सकते हैं या डेटा को स्केड्यूल कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्स सिस्टम, लाइक डिफरेंट एप्लीकेशन और डिफरेंट डेटाबेस. देखो एग्जांपल है, एग्जांपल क्या समझो. सपोज करो आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाए हो और आप आउट ऑफ स्टेशन हो, तो आप कैसे वॉच करते हो अपने घर को. आप ऐसे वॉच करते हो कि आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होता है,
एक ऐप होता है, उस ऐप में वो कैमरा इंटीग्रेट होता है। आप कहीं भी उस ऐप को ओपन करते हो और वो डेटा जो वहाँ पे लाइव चल रहा होता है, रिकॉर्ड होता रहता है, उसको आप अपने फ़ोन में देख सकते हो। सो ये भी एक तरह का रियल टाइम इंटीग्रेशन है, ठीक है, क्योंकि एक डेटा जनरेट हो रहा है कहाँ पे, आपके फ़ोन कैमरा में जो आपने घर पे लगाया है, और वो डेटा पास कहाँ हो रहा है, वो डेटा पास हो रहा है आपके फ़ोन में। आप सपोज करो कहीं गए हो 200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर हो, तो वो डेटा आप लाइव देख सकते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को आप इंटीग्रेशन बोल सकते हो, क्योंकि पॉइंट ए से डेटा जा रहा है पॉइंट बी में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप सोच सकते हो, जैसे एटीएम मशीन से अब जब डेटा वहाँ पे आता है, जैसे कि एटीएम मशीन में जब आप पैसे निकालते हो, टाइम में आप पैसा क्रेडिट करते हो, आपको रिसिप्ट मिलती है और सेम टाइम में आपको आपके फ़ोन में मैसेज आता है भी आपका अमाउंट डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, उसको आप देखते हो अपने फ़ोन में, ठीक है। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो, क्रेडिट करते हो, डेबिट करते हो, आपको रियल टाइम बेस पे फ़ोन में मैसेज भी आ जाता है और आपको वहाँ रिसिप्ट भी मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, ये एटीएम मशीन जब आप पिन कोड डालते हो तो आपके एटीएम मशीन से आपका जो अकाउंट है वो कनेक्ट होता है और रियल टाइम पे डेटा ट्रांसमिट होता है। यहाँ आप कैश निकालते हो और वहाँ पे आपका जो अकाउंट का डेटाबेस है वहाँ से एक मैसेज फेच होता है जो आपके फ़ोन में आता है। तो ये सारे प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कर बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट सोर्स सिस्टम से ये जुड़े हुए हैं और डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। See here, Boomi provides pre-built connector also. So Boomi offer a wide range of the connectors to integrate the popular application and database. So Boomi, you can see in Boomi integration platform, there is a pre-built connector like Salesforce connector, SAP connector, Workday connector, or database connector. So you can connect these applications through those connector, right? Integration pattern, Boomi provides like it supports various pattern like a publish, subscribe, point to point, and real time. Next point is hybrid deployment. You can deploy your process on prime or edge environment, right? So Boomi provides option to integrate on prime application to cloud-based application, right? Cloud-based application means database will be on cloud, database will be on cloud, any application will be on cloud, that is a cloud-based. Next point is centralized management. It provides tool for monitoring, managing integration from the single platform. ठीक है, सो ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑप्शन है Boomi इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में। यहाँ पे हम जो भी प्रोसेस या जो भी API डिप्लॉय करेंगे उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, ये देखो डायग्राम है, Boomi मीडिएट के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे थ्रू API, ये इंटीग्रेट हुआ है। ये देखो सोर्स पॉइंट है, ये डेटाबेस है जहाँ पे डेटा आपको स्टोर मिलेगा। Boomi provides option for store data also through Boomi Hub. We can create here model also, and that is a AWS PostgreSQL database. So through Boomi we can connect these database system and we can manipulate data also based on business requirement. Next point is
component and steps. So let's see about component. See, a component in Boomi Atmosphere is a reusable building block used to design and execute integration process. Components help define how data flow, transform and connects between different systems. So you can say component is a reusable entity we can use more than one time, right? See, types of component. Boomi is several component types, each serving a specific role and integration process. Like process component, that is a main component, the main process workflow that connects different source system, contain steps like connectors, transformation and logic. मेन कंपोनेंट है जो सेंट्रल कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, वो प्रोसेस होता है जो हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, जो प्रोसेस बनाएंगे उसको हम मेन कंपोनेंट या सेंट्रल कंपोनेंट बोलेंगे. अब उस सेंट्रल कंपोनेंट में बहुत सारी स्टेप इन्वॉल्व होंगे. उस स्टेप में कनेक्टर होंगे, मैप होंगे जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, लॉजिक्स होंगे, कई सारे स्टेप होंगे. जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ. देखो, ये प्रोसेस है, ये हमने एक प्रोसेस क्रिएट किया, तो ये हम एज ए कंपोनेंट यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसको हम एक सेंट्रल कंपोनेंट बोल सकते हैं. और ये क्या है, ये स्टेप है, ये स्टेप है. ठीक है, तो बहुत सारे जब स्टेप को हम कनेक्ट करते हैं तो एक प्रोसेस क्रिएट होता है, राइट. Connector component. Connector is also component that is used more than one time, like Salesforce connector, SAP connector, FTP connector, database connector. Next one is a profile component. Profile component define data. Next one, profile component define the structure of data moving between system. So through profile component, you can manipulate the data, like transform the data from one format to another format. Here you can see the example: XML, JSON, CSV, database schema. So we can transform data from XML to JSON, JSON to XML, XML to CSV, CSV to XML or database. Okay. See here, transform data from one format to another format. Next point is business rules component. So define condition logic. So here we can define the logics for validate the data, and you can set the rule also. This is also component, business rule. Process rule component, we can set the conditions and we can move the data through different execution paths. Custom scripting. So Boomi provides option to create a custom component through custom scripting. You can use JavaScript or Groovy script here. Next one is a document cache component. So document cache component provide option to hold temporary data, and that data you can use the further in the process. We will see all the steps, all the component in upcoming video. See the example how component work together. Synchronize customer data from Salesforce to SAP. So you have to use connector, retrieve data from the Salesforce. Then profile, define a data format from JSON to XML, XML to SAP. So here you can transform the data from JSON to XML for SAP, and then through map, through map component convert JSON to XML. Then you can use business rules for validate customer record, and then connector to send transform data to SAP. So that is a step to sync customer data from the Salesforce to SAP. So in Boomi, step is individual action within the process that define how data flow from the system to another
and steps are represented as icon shape inside the process and connected in sequence to perform an integration. So see here, this is a connected grouping of step, you can say the process. So types of step in Boomi we will see in upcoming video. Let's explain. Start step, the entry point of the process, that is a start step. It defines how data is received through API request, database query, and pickup, file pickup. Example says for connector get customer action, right? And next point is a connector step. So connector step provide option to connect any source system or destination system through the connector, and we can perform the action also like the get, post, query, and send. And next point, data processing step. These steps modify the data from within the Boomi flow, like map, business rule, decision, message, exceptions. So these all steps we can perform during create a process, right? One is a flow control step. So branch, route, and try and catch step are flow control step type. The final step of the process define whether the process should stop or loop back. Example, end process after sending data to SAP. So here you can see the scenario and example. Sync customer data from Salesforce to SAP. So you have to do these points: start step, map, business rules, decision step, connector step, and end step, right? End step you can see here, there is no end step, this is a written document step. So I am putting end step, stop. There is an option continue process, other execution paths. So you have to check for this statement and click OK, and you have to attach. Okay, so Boomi step versus components. So action within the process, that is step, and reusable elements, that is a component. So step we can't use more than one time, but component we can use more than one time, right? So let's get on top. We need to create a folder. So let's create a folder first. So you have to go to Component Explorer and then select Training and select 3 dot and create a new folder here. So you can write a name of folder and save it. I already created. You can see here Amit_March. After creating a folder, you have to select process library, right? So select first process library, and I selected a process library. Then you have to install the process. So write here process name, converting account information to Excel. You have to install. I already installed, so that's why I'm not clicking on install icon. So you have to install this, and then you can see this activity, right? So next point is install runtime and test the process. So for test the process, for test this process, you have to shape first, and then you have to go, then you have to select runtime management, and then here you can create a environment. First you have to create an environment, the fifth point, create an environment, then install the runtime. So create an environment through this icon, new, select environment, select environment name,
So you can select the environment name is it. So here you can write the environment name T test. So here you can write the environment name text, and you have to select test type. Environment classification is test type, then save it. Okay, so then you can see the environment. Here I am already created environment. So next point is I created environment. So next point is install runtime. So for runtime you have to select basic runtime, and then you have to select cloud here, and then install. I already installed, that's why there is no option to install again. So after installing a runtime, you have to click your environment like this, and you have to select, you have to choose, you have to attach that environment. So see here I am detaching the environment first, then I will attach. So here I am selecting environment, and then I have to choose item like a runtime. So here I am selecting, I am checking this point, and you can see one item attached. You can see here in test environment item runtime is attached, right? So we covered the first point, second point, third point, fourth point, fifth point, and now we have to test also. So let's test the process. So for test the process, you have to click, you have to select build option, and you have to choose start step. For start step you have to connect, you have to create a connections here. You have to select the connections. Connection name is Boomi Training FTP v2, that is connection, and you have to fill those, and you have to fill these data. Okay, host, port number, connection mode, remote directory, SSL mode, username, right? And then save it, save and close, right? And then you have to choose action query and select operation. In operation you have to select, you have to write a operation name account XML get, and then save it and close, right? I already created, so that's why there is no option to create again. If I clear this connection, so you can check here plus icon. So through plus icon you can create, right? So there is no need to create again, so that's why I use that connection. So I am selecting this, and for operation also, if you want to create new, so you have to clear this, and you have to choose plus icon, and you can import the operation. You can set the operation name. So I am already created, so there is no need to create again. So I am closing this, and again I am selecting account XML to get. Okay, and save it, and then I am selecting test icon, and then you have to choose runtime,
I already created and attached that runtime to environment. Then you have to run. Okay, you can see here our process is running mode. First in start shape, then end, right? So you can see the two document fetch from the FTP. This is a FTP connection. So we can here we are getting a data from FTP record, and you can see the documents data. See, that is a data, right? Second data is this. Okay, and here is a left arrow icon, so you have to click for edit mode, right? So that's all for today. So we'll catch up in upcoming video. Thanks.